Hi everyone, welcome to StudyIQ YouTube channel. StudyIQ channel रे आज हमें ଗୋଟେ ନୂଆ topic को देखिबा. The topic is very important for the OCS mains and for the UPSC as well. कि why Pacific Ocean is so dynamic. This topic ये topic को हमें geography optional रे लिखि परिबा. GS रे यूज करि परिबा अपन UPSC GS, OPSC GS and also in optional both way रे हमें को यूज करि परिबा. See, now why Pacific is always the subject of study. जेतरा में कौन से ओशन को हमें डिस्कस करूँ, Pacific Ocean will be the subject of study. Why? Because it covers 2/3 of the surface of the earth. That means as it covers 2/3 of the surface of the earth, and that is why any kind of changes in Pacific Ocean will lead to the global change. Will lead to what? Global change हमको देखा जाएगा. Will lead to have global changes हमको देखा जाएगा. Right? That will be there. So एटा हमको देखा जाएगा. Then हम जदि कहवा तो Pacific Ocean. Obviously हम Pacific Ocean जेतले कहूचे, right? When we say Pacific Ocean, जेतले हम कहूचे Pacific Ocean, तो basically हम Pacific Ocean obviously समस्त location जानचे. Then why it is so dynamic? तो direct हमें आंसर में why it is so dynamic. So first of all, this ocean is having over what it is, the shape of the Pacific Ocean is more or less circular ring or circum Pacific. That means ring no कहि better to say the horseshoe shape. See, rings of fire जो shape टा होची horseshoe shape, but Pacific Ocean रो जो shape टा होची circular ring shape हमें कहबा. It's like a circum Pacific. So that is two shape use. If you are writing shape of Pacific Ocean, then it's a right more or हमें कहबा circular in nature. जदि आपण एटा लिखुछंती horseshoe, that would be what your rings of fire टा रहइबो horseshoe shape रो. That means more than 40,000 किलोमीटर हमको माइल्स देखा जाबो, जोटा कि एथे देखा जाबो 452 volcanoes हमको देखा जाबो. More than what 452 volcanoes that stretches from हमको southern tip पूरा. तो ये गोटे इंपोर्टेंट डेटा हमको मिलला कि more than 400 हमें कहबा 452 हमको कोन मिल जाउची, that would be your what volcanoes. Then length हमको मिल गला कि 40,000 किलोमीटर 25,000 माइल्स हमको ये जो एरिया टा रही स्प्रेड है कि 75% of the total active volcanoes of the earth a region रे देखा जाबो. These are the data you need to write the answer. Then roughly 90% of the world's earthquake एठी देखा जाबो. So these are the data जोड़ के हमरो important data is roughly 90% of the earthquake देखा जाए, 75% of the active volcanoes, circular horseshoe shape, and this is would be what that 552 volcanoes, 40,000 kilometer, right? So these are the जो points बा हमको factual points रहला, and the data and facts जाको कहबा मेंस आंसर लिखला बेले आपण पैसिफिक क्वेश्चन रो कोनोसी आंसर लिखुछंती तो ये डेटा फैक्ट्स को पर तो ये जो डेटा एंड फैक्ट्स देखौची. सो दिस इज हाउ द पैसिफिक ओशन इज सो डायनामिक. अर्थात एटा डायनामिक एथि पई because there is subduction zone, dynamic एथि पई because there is hotspot, dynamic एथि पई there is reaches, dynamic एथि पई there would be fracture zone, dynamic एथि पई there is volcanoes. So that is why आमे कहबा पैसिफिक ओशन इज सो डायनामिक. सो डायनामिक इन नेचर ऑफ आमे बॉटम कथा हम कहूची तो बेसिकली डायनामिक्स जेतरा हम कहूचे इन दिस सेंस इट वुड बी सो डायनामिक. दैट मीन्स आमे पूरा जति आमे कहबा साउथ अमेरिका रे जति केप ऑफ हॉर्न टू स्टार्ट करी पूरा मु कहबी अलास्का जाए, एंड फ्रॉम अलास्का टू नेकी ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जे जो वेस्टर्न पार्ट आमे कहबा होल आम पार्ट को जति देखिबा इट्स ए ह्यूज पार्ट, राइट? तो ये देखि पारो रिंग्स ऑफ फायर. दिस रिंग्स ऑफ फायर जेतरा में कहूचे दैट मीन्स द वोल्केनोज सराउंडिंग द पैसिफिक ओशन को हमें कहते हियर रिंग्स अर्थात शेप ऑफ पैसिफिक ओशन, फायर अर्थात वोल्केनोज. बट दिस रिंग्स ऑफ फायर शेप कौन रहउची horseshoe shape. But when we comes to the shape of Pacific Ocean, that would be largely circum-Pacific or it would be ring shape हमें कहि परिबा. Now एथरे आउ गोटे क्वेश्चन पछारे कि why Eastern Pacific is so dynamic, whether Western Pacific is dynamic or Eastern Pacific is more dynamic. Eastern Pacific is more dynamic. Why? Because Eastern Pacific, this region is more dynamic. This part is more dynamic. Why this part is more dynamic? Because there is a reach. There is a what? Reach is there. There is what? Reach is there. This is dominant reach is there. Apart from that, there is also hotspots. Also subduction zone. Also what? Fracture. Also
this portion also having number of fracture. So hotspot is there, reaches is there, subduction zone is there, fractures is there, then also hydrothermal vents. So there is also hydrothermal vents also there. So these are the ame jeti kahiba. So this is why it's dynamic. So dynamic ra nature jetron eastern pacific katha question asuchi, then you have to write the, here is Nazca plate, here is cocoa plate. This region you will have cocoa plate, in this region cocos, there would be cocos plate, in this region that would be Nazca plate, here it would be what, Nazca plate is here, there is Nazca plate. So plates also there. So that is why. So ये rings of fire हमें देखे दले, and this would be your Aleutian Island, this would be Kuroshio Island, Japan, Philippines, Indonesia, right, New Zealand. So these are the parts of Central America, North America, here is South America, they are the part of Ipura. And here is also Challenger Deep also there, Challenger Deep also there, which is the part of Mariana Trench हमें जाको कही परिबा. तो ये जो हमें देखो जे, that means rings of fire हमें देखिबा. Apart from that you will have this. So here you can see the plates, kete sara plates अछि. Here is Aleutian Trench, so number of trenches, Nazca plate, Cocoa plate, Juan de Fuca plate, here is Juan de Fuca plate. तो ये जति हमका, this is the ridge, ये देखि परिबा अपनो ridge, this is what हम कहबा ये very strong ridge, ये ridge मध्ये हमको देखा जाउछि, right. The plate is moving towards the west, ये हम देखि परिबा, the plate is moving, right. So this is also there. तेणु कर ये देखि परिबा volcanoes are volcanoes plate, number of plates, number of volcanoes. So जेतला हम कुछ dynamic, that is why dynamic, because number of plates, number of ridges, number of fracture zone, number of hotspot, number of hydrothermal vents, subduction zone, बहुत सारा रही है. जेमति कि एठी जापान पाखरे देखिबा हमें Amur plate is there, there is Mariana plate is there, Philippines plate is there, Carolina plate is there, Sunda plate is there, and also Yangtze plate is there. So number of plates जेतल गोटे जगह मर्ज करूची, and this is the converging zones हम कहिबा. So destructive zone, this is what destructive zones, or you say plate margin. Plate margin को हम तीन प्रकार पढ़ी थाउ, either what मतलब plate tectonic कौन पढ़ू हमें, जेतल मैकेंजी ही जो, पार्कर ही जो, मोर्गन कथा नहीं जिबा, they were discussing what, either continent, ocean, ocean. So this is what, this would be destructive zone, or I would say convergent बाउंड्री. तो ये जो कन्वर्जेंट बाउंड्री रही पैसिफिक ओशन चारिपटे, चाहे से जापान रे हो, चाहे से न्यूजीलैंड पाखरे हो, चाहे से इंडोनेशिया पाखरे कथा हमें कहबा, चाहे से पेरू चिले कथा नहीं जो, चाहे से सेंट्रल अमेरिका कथा नहीं जी, और आई वुड से हियर वुड बी दैट मीन्स हमें जदी कहबा ए रीजन रे हमें देखबा कोठी जो जुआन डे फुका अछि, जहा को हमें कहूचे ब्रिटिश कोलंबिया साइड रे में मध्य देखि परिबा. तो दीज आर द रीजन्स. सो दैट इज व्हाई this region, here you can see the bottom topography. The bottom topography number of trenches हमको देखा जिवो, जेम तुम कहले Aleutian कथा नहीं जो, Kuroshio कथा नहीं जो, जापान कथा नहीं जो, Philippine trench कथा नहीं जो, Challenger deep कथा नहीं जो, Izu trench कथा नहीं जो, Mariana trench, Izu trench, Japan trench. The number of trenches हमको देखा जिवो, Climatic trench, Tonga trench, right. तो ये सारा जेते हमको trenches सब देखा जाउची. This is how this is हमें कहबा, ये बहुत ही difficult से इतपे हमें ताकू कहि परिबा. Next, here you can see the hotspot. Number of hotspots also there. These are the hotspots, right? ताले hotspots भी रही ची Pacific Ocean रे. शायद बाकी को ocean रे हमको इतने सारा देखा जाऊ नहीं. तो because of this nature, because of this what, throughout the ocean देखिबो कोन से ocean रे चारि पटे subduction zone नहीं बा convergent boundary नहीं. This is the only ocean जोठी में चारि पटे convergent boundary देखा जिवो. Plus convergent boundary तो अच्छी, plus number of fracture zone भी अच्छी. Sea floor रे जेते fracture zone हेगला, hotspot इतने सारा hotspots रही ची, and this makes the Pacific Ocean so dynamic. तेनो any changes in Pacific Ocean will make. Plus द्वितीय कथा, Pacific Ocean रो जेते हमें कहबा this portion, western portion is what हमें कहबा, the western part is the oldest part, and this part is the newest part. Is the oldest part, and this portion is heaviest part as well. ये oldest and heaviest part मध्य. Right. So this portion also, and this is the most, ये जो part को हमें देखिबा सबुठु most violent part होची this part. This part is the most violent part in terms of the volcanic eruption and the lavas को जति हमें कहबा एपट साइड तुमको देखा जो खास करी volcanoes I would say. ये most of all. और सुनामी मध्य देखा जो, obviously सुनामी भी बहुत देखा जो, तो सुनामी भी तुमको देखा जो. This is very, that is why being a complex of everything, that is why dynamic.
प्लस आम कह मोर देन 700 मिलियन इयर्स ऑफ आर एज आम कह एंड पांजिया 1 कथा नहीं जो पांजिया 2 कथा फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सी फ्लोर ये तो कंटिन्यूअसली चली तार तो दैट इज व्हाई इट्स मेक्स सो डायनामिक एंड आम कह कॉम्प्लेक्स राइट तो ये देखिए तार बॉटम टोपोग्राफी बॉटम टोपोग्राफी केमती थाए जमी मिड ओशनिक रिज होगा सबडक्शन जोन होगा सेल्फ होगा माउंट होगा या बट तमर बेसिन कहीपर सेल्फ कहीपर राइज कर सी फैन कहीपर अबाइसाल प्लेन कहीपर तो नंबर ऑफ एवरीथिंग इज देयर ये सब तो रही करेक्ट तो ये देखिपर द लाइक मुरे फ्रैक्चर जोन मोकाई फ्रैक्चर जोन क्लैरियन फ्रैक्चर जोन क्लीपर्टन fracture zone, then Mendocino fracture zone, number of fracture zones we are having, number of fracture zones. So number of fracture zones मध्ये हमको एठी देखा जिवो. So this is how ocean basins look like. ये तो समस्त शायद देखी साथ आगुरु मिड ओशनिक रिज हेगला अबाइसल प्लेन हेला डीप सी कैनियन भी देखा जो ऑब्वियसली कैनियन वुड बी हियर ये कैनियन भी तुमको देखा जो सबमरीन्स कैनियंस हमको भी देखा जो तो ये पूरा हमें कहबा इट्स ए right that is why this is complex phenomena this is how tale complex kahi ki rings of fire plate tectonic magma अछि volcano जो oceanic range अछि volcanic arc island भी अछि everything is there that is what everything सब हमको एठी देखिया को मिलियो राइट अच्छा तापे हमें सी फ्लोर को हमें स्टडी करे पे हमर मिशन मध्ये रही डीप ओशन मिशन कथा नहीं जो राइट आवर इवन मत्स्य 6000 मिशन सब रही तो मत्स्य 6000 मिशन भी कह ये सब कौन स्टडी कर क्लाइमेट चेंज को स्टडी कर ओशन इकोलोजी को स्टडी कर सालिनिटी स्टडी कर टेम्परेचर स्टडी कर प्रेशर स्टडी कर मिनरल्स को मैपिंग कर सी फ्लोर को मैपिंग कर सो दैट आमको कौन आगू जाकि ओशन को आम एक्सप्लोर कले ही यूज कर राइट इवन यू कैन हैव द माइनिंग कर डीप सी माइनिंग पॉलीमेटालिक नोडुल्स को आम माइनिंग भी कर सो दीज आर द थिंग्स आम पूरा ये पार्टा देछि बिकॉज दिस पार्ट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द आम कह डीप सी जमी आम मैंट मिशन करा मत्स्य 6000 कथा नहीं जो तो ये तो तापई जो डाइव करके जो ये करा एडवांस मारिन्स दैट इज व्हाट स्टालियन फॉर द ओशन बायोलॉजी एंड दिस इज द थिंग्स इज देयर ओके डन सो विथ दिस थैंक यू एवरीवन हैव अ गुड डे टू ऑल थैंक यू ऑल